So hello guys, welcome to Ashutosh Coaching Center. Now today we are going to start the chapter name is System of Particle and Rotational Motion. होता क्या है देखो, पहले हम जानेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है। देखो, a rigid body is a system of particles with a finite size do not get reformed and under the influence of any external forces, and the distance between any two particles of an ideal rigid does not change even when it is under the influence of external forces. The motion of a rigid body in which the velocity of all instrument particles is same at any instant of time is known as the transitional motion, and the motion of a rolling body is the combination of a rotational and the translational motion. The fixed line about which a rigid body rotates is called the rotational motion, and when a body is in the rotational motion, every point moves along the circular path and its axis and the center of mass and the center of axis and on the center on the axis of rotation and the plane of the circle and perpendicular to the axis of rotation. Okay, if a rigid is a fixed to an axis or a point, its motion is pure rotational and motion, and the body is rigid, and the rigid body is free, and it can have pure transitional motion or a combination of transitional motion and rotational motion. The motion in which the axis rotation is not fixed but the point of contact is fixed is called the precise. Okay, ये कह सकते हो। जो भी कुछ मिस्टेक कर दिया आप इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उधर सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज द पॉइंट दैट बिहेव्स एज अ मास ऑफ द system is concentrated at it and that all external forces are acting on it. For a rigid body, center of mass or is dependent on the state of the body, and that is whether it is in the rest or in the accelerated motion. Center of मास विल रिमेन सेम। ओके, सेंटर ऑफ मास में देखो क्या होता है। इफ अ consist of n particles of masses m1 m2 m3 and mn having position and the vectors r1 r2 r3 and the position of the vector of the center of mass is equal to x is equal to sigma mxi and sigma mi। इसे फॉर्मूला है, ठीक है, याद करना है इसको। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स क्या होता है? इस पूरे को आप ध्यान समझ लीजिएगा। ये पूरा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स है। इसमें देखो मैं ही बता देता हूँ क्या होता है इसमें। इसमें क्या है, टू पार्टिकल सिस्टम सोन इन द फिगर एंड वेयर फॉर्मूला इज द एम वन एक्स वन बाई एम वन एक्स एम टू एक्स टू बाई में एम वन प्लस एम टू। वेयर क्या कह रहा है, इफ द टू पार्टिकल्स हैव द सेम मास देन द एक्स इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाई में एम प्लस एम, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू बाई में टू हो जाएगा। फाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन at the rest it initially rest will or will move with the same velocity if it is in the motion initially. The position of the center of mass depend upon the shape size and the distribution of mass of the body. The center of mass of an object need not lie within the object. In symmetrical body having homogeneous distribution, mass of the mass the center of mass coincide and with the geometrical center of the body. The position of the center of mass of an object changes in the translational motion but the remain unchanged in the rotational motion. देखो अब अगला क्या कह रहा है में, फोर थ्री पार्टिकल्स ऑफ इक्वेशन मास एंड द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द centroids and of the triangular formed by the particles. The center of mass homogeneous body of the regular shape like the rings, disc, sphere, rod and lie at the geometrical center. ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है? The rigid body perform a pure transitional motion if each particles the body undergo the same displacement in the same direction in given in the interval of the time. Rotational motion क्या होता है? The rigid body perform a pure rotational motion and if each particles of the body moves in a circle and center of all circle lie on a straight line called the axis of rotation. Motion in a center of mass क्या होता है? The center of mass is a unique point in which in a space where the weighted relative position of the distribution mass sum up to zero, and it is a point where force applied cause the motion in the direction of the motion without any rotation, and the mass of the body is distributed around the center of mass. Okay, linear momentum of a system of particles क्या होता है? The total momentum of a system of a particles is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass.
P is equal to mb. Differentiation above the equation with respect to time, dp by dt is equal to mdv by dA and mm, and dp by dt is equal to f next. And this is a statement of Newton's law extend to a system of particles. When the total external force of acting on a system of a particle is zero, the total relative momentum of a system is also constant. dp by dt is equal to zero and p constant हो गया. when the total force uh, when the total force on the system is zero and the velocity of center of remains the constant. Okay, कह रहा है वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the vector product the the vector product and the cross of two vectors is given by the a dot a is equal to होता है a b sin theta, where a is equal to a modulus, b is equal to b modulus, and the n is equal to unit of vectors of and unit vector perpendicular to a and b, and the product of two vector is another vector perpendicular to the given vector. Okay, the properties of vector product क्या होता है. Vector product is not commutative. A into b is equal to ba, and b a into b is equal to minus ba, and vector is a productive distributive. Okay, a प्लस ए इंटू बी ए इंटू या बी इंटू सी को अंडर ब्रैकेट कर दो, आप फिर बाद में क्या कर दो ए इंटू बी करो और प्लस ए बी सी करो, इसको दोनों के आपस में बराबर आ जाएगा. ओके, अब ए इंटू बी जो होता है हमेशा एक नल वेक्टर होता है. ठीक है, अब डायरेक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड द क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देखो. When C is equal to A into B, the direction of C is at the right angle to the plane containing in the vector A and B. The direction is determined by the right and the screw rule and the right hand thumb rule. ओके, इसमें हमारा एक पूरा ग्राफ दे रखा है, इसको समझा है. देखो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है. rotate a handed screw with the first vector toward a towards the second vector b, and the rotation in which the right hand screw it moves gives the direction of the vector c. Right hand thumb rule क्या कहता है. curls finger of your hands and from a to b, then the direction of erect thumb will point in the direction of a and b. एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी क्या होता है. देखो पहली बात कहा जाए तो द जनरल रिलेशन कनेक्टिंग एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय द इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इसको भी ध्यान रखना. अब देखा एक्सीलरेशन की एंगुलर एक्सीलरेशन क्या करता है. द एंगुलर एक्सीलरेशन इज अ अल्फा is the time rate change of angular velocity. Okay, a is equal to dw by dt, and if the axis of rotation is fixed and the direction of omega and the hence that of alpha is fixed. Torque क्या होता है. torque of momentum of a force is about axis of rotation. Tau is equal to rf sin theta. It is a vector quantity, and if the nature of the force is to rotate object clockwise, the torque is called the negative, and if the rotate object anti-clockwise, then it is called positive. The SI unit is Newton meter, and its dimension is ml square t inverse 2. It in rotational motion torque is equal to ia. ये कैसे, where angular acceleration and it lies moment of inertia. अब angular momentum क्या होता है. angular momentum is the rotational analog of the linear momentum and denoted by L, and the angular momentum L is equal to rp sin theta. It is the unit and the joule per second, and the dimension formula is ml square t inverse 2. Relation between angular momentum and the torque. Tau is equal to dl by dt. The time rate of change of the angular momentum of a particles is equal to the torque acting on it. Conservation of angular momentum क्या होता है. It is an external force acting on a body or a system is zero, and then its angular momentum remains conserved. Tau external is equal to zero जो होता है, then L is equal to L omega and constant and 1 omega and the 2 omega 2. Equilibrium of a rigid body क्या होता है. A rigid body is said to be in the mechanical equilibrium, and if the both in linear momentum and angular momentum are not changing with the time. Transitional motion क्या rule क्या होता है. The vector sum of the forces on the rigid body is zero, and the linear momentum is the conserved, and f1 plus f2 plus dash dash fn is equal to zero. Rotational equilibrium क्या होता है. The vector sum of the torque of the rigid body is zero. The angular momentum is the conserved tau 1 tau plus and tau n is equal to zero. Partial equilibrium क्या. when two parallel forces both equal in the magnitude are applied perpendicular to the allied rod, and the system will be in the rotational equilibrium and not in the transitional equilibrium. And when two forces are applied perpendicular in
two opposite direction, the body it is in the transitional equilibrium but not rotational equilibrium. Couple क्या होता है? The pair of equal and the opposite forces with the different lines of the action is known as the couple. The couple produces the rotation without the translation. When we lead of a bottle by the turning our finger, applying a couple to the lead. Okay, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? मोमेंट्स देखो ये पूरा दे रखा है ग्राफ, इसको समझना ध्यान से। कह रहा है फॉर अ लीवर इक्विलिब्रियम एट अ इक्विलिब्रियम द मोमेंटम ऑफ द लेफ्ट एंड द मोमेंटम ऑफ द राइट। देखो इस लेफ्ट में मोमेंटम है, राइट मोमेंटम है, ठीक है। अब d1 f1 इज इक्वल टू d2 f2 होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ अ लीवर। एंड इसमें होता क्या है? लीवर इज लाइट रॉड pivoted at a point along the length and the point is called the fulcrum. Okay, and seesaw on the children's playground is a typical example of lever. Center of gravity क्या है? Center of gravity of a body is the point where the total gravitational torque on the body is zero. The acceleration due to gravity is same at all parts of the body, and the center of gravity coincide with the center of mass, and g varies the center of gravity and the center mass of mass are different. Moment of inertia. The inertia of rotational motion is moment of inertia. It is denoted by L. The moment of inertia is property of an object by the virtue which opposes any change in the states and of motion and about its axis. The moment of inertia of a body by about a given axis is equal to the sum of the product of the masses of its constituent particles and the square of their respective distance from the axis rotation, and the moment of inertia is given by the I is equal to सिग्मा mi स्क्वायर बाय I इज इक्वल टू जो है वहाँ पे 0 है, 1 है और ऊपर में n है। कोई दिक्कत? अब क्या है रहा है यहाँ पे? ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। Its unit is kg meter square and the dimension formula is ml square. The moment of inertia of a body is depend on the first position on the axial rotation and the orientation of the axis of rotation and the shape and the size of body and distribution of the mass and of the body about axis of the rotation. The physical significance of the moment inertia is the same rotation moment and as the mass in the linear motion. Okay, rotational kinetic energy क्या होता है? The portion of an object kinetic energy that result from rotation is called the rotational kinetic energy, and the rotational kinetic energy directly proportional to the rotational inertia and the square of magnitude at the angular velocity. A rolling object has both translation and the rotational kinetic energy. The rotational kinetic energy formula kr is equal to half L omega square, where kr is equal to kinetic energy and L is equal to moment of inertia and omega is equal to angular velocity, and SI unit joules J. MKS unit system kg meter square per second square. Parallel axis theorem. The moment of inertia of a body about an axis parallel to the passing through its center is equal to the sum of the moment inertia of the body about axis passing through the center and the product of mass of the body times the square of the distance of a between the two axes. The parallel axis theorem formulas L is equal to LCMH square, where I is equal to momentum. L is equal to momentum of the inertia of the body, LC is equal to moment of inertia about the center, M is equal to mass of the center, mass of the body, or H square is equal to the square of distance between the two axes. और perpendicular axis theorem क्या कहता है? For any plane, the moment of inertia about any of its axes and which are perpendicular to the plane and is equal to the sum of the moment of inertia about any two perpendicular axes in the plane of the body and which intersect the first axis and in the plane. The perpendicular axis theorem formula. The perpendicular axis theorem is used to when the body is symmetric in the shape about two out of three axes. The moment of inertia about two of the axes are the known of the moment of inertia about the third axis can be found using the expression LA is equal to LB plus LC. अब द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 80, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 80 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा इक्वेशन है, इसको ध्यान रखो और ये बिल्कुल ही याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा ईजी नहीं है, इसको छोटा किया जाए तो ज़्यादा बेटर जाएगा।
इसको और छोटा किया जाए, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ओके, ये फॉर्मूला रखना। एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, वेयर क्या कह रहा है, थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन द रोटेशनल मोशन एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द फाइनल वेलोसिटी एंड ए इज अल्फा इज द एक्सीलरेशन, या फिर ए इज द एक्सीलरेशन। द कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन क्या है, इसको समझो। इसको फोटो खींच लिया अभी, ये आपके भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लीनियर मूवमेंट्स को एक्स से करते हैं, इसको डी एक्स बाई डी टी डी और सो ऑन, तो इसको आप नोट कर ले, ठीक है, ये काफ़ी काम आ सकता है। उसके क्या कह रहा है, रोलिंग मोशन क्या होता है। A body such a sphere or a wheel or a primary a circular body that is rolling over a horizontal surface undergoes rolling motion and at every instant, and there is a single point of contact. Transitional motion and the rotational motion are both included and in the rolling motion। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी देखो, पूरा जब ग्राफ दिख रहा है तो समझो ये पूरा रोल कर रहा है, इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम वन लग रहा है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लग रहा है और भी बहुत सारे फोर्सेस। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सच अ रोलिंग बॉडी इज गिवन बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कहता है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एल ओमेगा स्क्वायर, वेयर मास जो है बॉडी है, मतलब एम जो है मास ऑफ बॉडी है, वी जो है ट्रांजिशनल वेलोसिटी है, एल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड ओमेगा जो है angular velocity of the rolling body है। So guys, thanks for watching video till then and don't forget it to like, share and subscribe it because you are a part of journey of NEET। Okay, so bye bye and see you in next video।